Good morning. Welcome to Hindi is Easy. Today we are going to see the book back exercise for the lesson Sadar Naman, lesson number 1, class 7 from the book Gunjan Hindi Patmala. If you still not subscribe my channel, please subscribe my channel and recommend among your friends circle. If you have any clarification or feedback, please do put in the comment section and surely reply back. If you like the video or the video is useful for your learning, please do click the like button. Your subscription and like will motivate me to add more videos. भाषा ज्ञान दिए गए शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची लिखिए. पर्यायवाची इज द वर्ड विच हैज़ द सेम मीनिंग बट द वर्ड्स विल बी डिफरेंट. So let's see the English meaning for this. Deep is the earthen lamp. Path is path. One is forest. Fool is flower. Hath is hand. Andhera is darkness. Now the Parayavachi Shabd for deep is diya, deepak, chirag. Path is path, raah, rasta, marg. One is forest, jungle, kanan, aranya. Fool is flower, pushp, suman, kusum. Hath is hand, kar, hast, pani. See the na here, it's not pani, it's pani. Andhera is darkness, andakar. Tam, timir. So check your answers here. So if you want, you can take a snapshot. अपनी बात को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए वाक्यांशों या अनेक शब्दों के स्थान पर कभी कभी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है. टू मेक योर कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल, प्रभावशाली इज पावरफुल. Instead of group of words, you can replace with a single word. Okay, so that will also have the same meaning. इससे भाषा सुगठित और सुंदर हो जाती है. And by doing this, the language becomes beautiful. प्रियांक अच्छे आचरण वाला तथा मीठा बोलने वाला है. So Priyank is having a very good habit or moral, and मीठे बोलने वाला means who talks sweet, who doesn't hurt anyone. So instead of using the group of words, you can replace with a single word that also gives the same meaning. Priyank sadachari. Sadachari means very good behavior तथा मृदुभाषी. मृदुभाषी is who speaks sweet, who doesn't hurt anyone. Priyank sadachari तथा मृदुभाषी है. See, this group of words is replaced with sadachari, and मीठा बोलने वाला, the person who speaks sweet, is replaced with मृदुभाषी. When we are doing this, the sentence looks more beautiful and attractive and powerful, and the language becomes beautiful. Now, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द कविता में से चुनकर लिखिए. So you have to replace the group of words given here with a single word that we have used in the poem. जहाँ कोई जन ना रहता हो, where the person doesn't stay at all, which is empty forest we studied, right? So nirjan. निर्जन. निर means without, जन is people, so without people. पथ पर चलने वाला, the person who moves in the path, it's a traveler. पथिक, पथिक. जो बगीचे की देखभाल करता है, who takes care of the garden, is a gardener. माली, माली. आदर के साथ, with due respect, सादर, सादर. सा means with, सा there, with respect. So check your answers here. इन शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए. वर्ण विच्छेद is we have to split the sounds. निर्जन, so you have to write ni, this is half r, right? Then jan. So what is the sound here? Na kuda e ki matra, choti ki matra. So you have to put na halant plus e. Then R is half letter, so you don't have to write any vowel here.
Then jerk, j halant plus a, and nak, n halant plus a. This is what here written. Nir, adara, j, na, nirjan. Next one. Savara, who has decorated. So circ, sa halant plus, this is a anunasik, right? So sa halant plus a ke badal you have to write this anunasik here. So a. Then va, so va halant plus a. Then rak, ra halant plus a. Savara. So sa va ra, savara. Next one is tilak, where ta kuda choti ki matra is there. Ta halant plus e. Then la has to be written la halant plus a, and ka has to be written ka halant plus a. So tilak is mantra. So mak, ma halant plus a. But here anuswar dot is there, so you keep dot above a. Then tra. Tra is sayukta akshar, which is formed by ta halant plus ra. So now you have to split and write ta halant plus ra. No, ra halant plus a. So there is no other matra, so this you have to stop here. So andiyare, a is a vowel which with a anunasik. So write as it is. You should not put any halant here. Now di is the halant plus choti ki matra di, and ya. So ya halant plus a. Then rek, ra halant plus a ki matra a. Andiyare. Okay. So check your answers here. किसी शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं. So the part of the word or the letters that comes in front of the existing main word we say as उपसर्ग, is prefix. कविता में निर्जन शब्द आया जब जन शब्द में निर उपसर्ग जोड़ा जाता है तब शब्द बनता है निर्जन. So when nir is added, so this शब्दांश is added in front of jan, then we get nirjan. This is how by adding a prefix nir we got nirjan, right? So here दिए गए शब्दों में निर उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाए. You have to add nir in front of the given main word. So nir plus vikar, when half ra will go to the ref of the next letter. So nir virkar. So nir vikar, like this you have to write. So ra will go on the ref, next letter ku ref la poidum. Nirjeev, without life. Nirjeev. Nirbhay, without fear. So this ra will go here. Nirbhay. Nirdosh, who is innocent. Nirdosh. Nirmal is very clean. Nirjal is without water. Nir means without. So the उपसर्ग निरोड मीनिंग है ना without. इसी प्रकार आदर शब्द में स उपसर्ग जोड़ने से सादर शब्द बना है. When you are adding स उपसर्ग, it means with. When you are adding nir means is without, absent. Now serve plus fal, safal, success. Sa plus it, sahit. Hit is doing good things. Sahit is doing very good things. Sa plus jeev, it is very lively, sajeev. Sa plus gun, sargun, with a lot of good characteristics. Sa chitra means with the pictures. Sa parivar means with the family members. So check your answers here. By adding sa upsarg, we get new words. Next one is tukant shabd, where it's a rhyming word where the ending sound of the word should be same. So matra should be same. Andiyare, ujiyare, naman, chaman, hath, sat. You can write any word from your vocabulary. Pat, rat. See the sound. The ending sound should be same. Van, tan, man, roop, dhoop. So the sound should be same in the tukanta. So that means the matra should be same. The last letter of the matra should be same. So check your answers here. Next one.
जिसने पहला दीप जलाकर अंधियारे को ललकारा है, पंक्ति में गहरे छपे शब्द का अर्थ है जलाकर, जला करके. सो जलाकर मीन्स हु हैज डन द बर्निंग, राइट. जलाकर क्रिया पूर्वकालिक क्रिया है. सो हियर द verb is a पूर्वकालिक where one more action is done before doing the another action. पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है, so it comes before the main verb. So here main verb is challenging. So before challenging what they did, they burned the lamp. So मूल धातु में कर या करके लगाकर पूर्वकालिक क्रिया बनाई जाती है. So how we are making a पूर्वकालिक क्रिया by adding कर या करके. कर means by doing. So doing that action before the main verb, we make that verb to be पूर्वकालिक. So जलाकर, जलाके, we make that as a पूर्वकालिक क्रिया. So कविता में से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनमें पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है. So you have to choose the lines from the poem where we have used the पूर्वकालिक क्रिया. जिसने पहला हाथ बढ़ाकर, so बढ़ाकर इस पूर्वकालिक कर का, सबको दिया सहारा. I'm just explaining one with the writing, the next one I'll show with the poem itself. So here, जिसने पहला हाथ बढ़ाकर सबको दिया सहारा, the person who has forwarded his hand and then gave the support to everyone. So giving support to everyone is the main action here. அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணாரு? Forwarding the hand, हाथ बढ़ाकर. So this is पूर्वकालिक क्रिया. So before the main verb, another action also is completed to do the next main verb. Okay. So how to identify the पूर्वकालिक? By adding कर या करके we can make as a पूर्वकालिक क्रिया. So you have to pick the lines from the poem where you see the पूर्वकालिक क्रिया the sentence. जिसने पहला पाँव बढ़ाकर पथ का रूप संवारा. So who has taken the first step forward before decorating the path. So here जिसने पहला दीप जलाकर अंधियारे को ललकारा है. So you have to pick such lines from the poem and write it. Okay. You can take the snapshot. So जिसने पहला हाथ बढ़ाकर सबको दिया सहारा है, जिसने पहला पाँव बढ़ाकर पथ का रूप संवारा है, जिसने पहला शूल हटाकर फूलों को सत्कारा है, जिसने पहला तिलक लगाकर जय का मंत्र उच्चारा है. These are the lines where you can see पूर्वकालिक क्रिया before the main क्रिया. Okay. Next one, विषय संवर्धन गतिविधियाँ. We'll just discuss what is given in the subject enrichment activities. अपनी रुचि के अनुसार कोई एक गतिविधि चुनकर कीजिए. You can do one activity based upon your interest. So देश के विविध क्षेत्रों में प्रथम व्यक्तियों की सूची बनाएं. So you have to make the first person in different fields. First Prime Ministers, जवाहरलाल नेहरू. फर्स्ट राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति इस राजेंद्र प्रसाद. प्रथम अंतरिक्ष यात्री, द फर्स्ट पर्सन टू गो टू स्पेस इज राकेश. प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता हुआ हैज गॉट द फर्स्ट नोबेल प्राइज इज रविंद्रनाथ टैगोर. प्रथम मिस यूनिवर्स, द फर्स्ट मिस यूनिवर्स इज सरिता फरिया. प्रथम महिला पर्वतरोही जो माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ी हो, सो हु हैज क्लाइंब माउंटेन, द माउंटेनियर, द फीमेल माउंटेनियर इज बचेंद्री पॉल in the year 1984, right? So you have to make the list of the first personalities of this from our country. इस सूची को आगे बढ़ाइए और इन पर आधारित पीपीटी तैयार कीजिए. You can make a presentation by increasing more first things in the list. Okay. So you can go and check in this website to get more details. This is the answer you can give. Jawaharlal Nehru, Rajendra Prakash, Rakesh, Rabindranath Tagore, Sarita Faria, बचेंद्री पॉल. लिस्ट यू कैन कंटिन्यू द लिस्ट विथ मेनी थिंग्स. ओके. प्रथम इंग्लिश चैनल पार करने वाली महिला आरती शाह. प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी. भारतीय उपग्रह आर्य, फर्स्ट सैटेलाइट इज आर्यभट्ट. प्रथम महिला IPS इज किरण बेदी. प्रथम बोलती फिल्म इज आलम आरा. कैन मेक द लिस्ट लाइक दिस. देश के महान व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त करके कक्षा में चर्चा कीजिए. सो यू हैव टू गेट मोर डिटेल्स अबाउट द ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ आवर कंट्री एंड यू कैन डिस्कस. चित्र देखकर मन में उठे विचार बताइए. आप इन महिलाओं को नमन क्यों करना चाहेंगे. सो सीइंग द पिक्चर, व्हाट डू यू फील एंड व्हाई यू वांट टू respect these people. So they are all are working, they are taking some responsibilities, right? So in today's field we can see many people are there
in the health department education department. They are taking care of the family, they are doing the work, and they are doing all the things equivalent on par with the man, right? They take care of the family, they take care of the house, they take care of the society, they share their hands in their country's development. In this angle, if you see, we have to respect such female who is not wasting the time and doing something useful for the country and for themselves and also for the family. आपके जीवन में क्या कभी ऐसा अवसर आया है जब आपने बहुत हिम्मत जुटाकर कठिन काम को किया? सो इन योर लाइफ इज एनी सिचुएशन इज कम वेयर यू हैव टू गैदर योर ब्रेवरी एंड डू सम हार्ड वर्क. अनुच्छेद लिखिए मेरे जीवन का कठिन काम. यू कैन राइट ए पैराग्राफ द डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ माई लाइफ. नौ पाठ से आगे इंटरनेट या पुस्तकालय की सहायता से देशभक्ति और देश की महिला गान से संबंधित रचनाएं एकत्रित करके कक्षा में सुनाएं. सो यू कैन गो एंड चेक इन द इंटरनेट द पैट्रियोटिक सॉन्ग और the song which portrays the women, and you can collect and sing in the class. मैंने सीखा और जाना. सो व्हाट आई लर्न. किसी भी देश के विकास के पीछे उसके नागरिक का योगदान अहम भूमिका रखता है. तो द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट इज द सिटीजन. मैं अपने देश का वह नागरिक बनूंगा और अपने देश का नाम ऊंचा उठाऊंगा. So I will also become such citizen. I'll spread the fame of our country. So what you feel, you can write. So hope you have understood the book back exercise. If you have any doubt or clarification, please put in the comment section. Surely reply back. Thank you, students.